welcome back to my channel. So today's makeup look is going to be engagement makeup look. ये look वैसे तो आप किसी भी wedding event पे carry कर सकते हैं depending upon how much makeup you like and what color you are wearing, but I'm going to call this engagement look because I'm going to be wearing my engagement dress. मैं जा रही हूँ अपने ससुराल की साइड पे एक शादी पे and I'll be getting ready, तो मैंने कहा why not film a tutorial. So yeah, this video is going to be really special for me क्योंकि एक साल बाद मैं अपना engagement dress दोबारा पहन रही हूँ. I'm really excited and अभी तक I don't know what kind of makeup look I'll do. I'll decide it along the way. So I hope it turns out good and you people like it. If you do, you know the drill. Do like this video, do comment, do share and do subscribe. Let's go. प्राइमर में यूज़ करी हूँ maybelline का बेबी स्किन प्राइमर और इससे पहले मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया है और मॉइस्चराइज़र. उसके बाद मैं ये प्राइमर लगा रही हूँ. फाउंडेशन में यूज़ करूँगी लॉरियल की इनफेलिबल फाउंडेशन और इसके अलावा मेरे पास बाउंस के कुछ फाउंडेशन सैम्पल्स पड़े हुए थे, तो उसमें से आई टुक शेड 2.1 एंड आई मिक्सड इट विद लॉरियल इनफेलिबल फाउंडेशन और मैंने मिक्स करके अप्लाई किया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी फुल कवरेज. कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ maybelline का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड न्यूट्रलाइज़र क्योंकि एक फुल कवरेज लुक चाहिए बिकॉज आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ वेडिंग इवेंट, तो फुल कवरेज इज़ अ मस्ट. So girls, if you're looking for really good eye brushes, then you can get your hands on these. ये eye brushes हैं Beautify by Amna के and they're pretty good. हर पर्पज़ के लिए एक eye brush है इसमें and I'm loving it since I've bought it. Now the eye makeup, पहले मैं अप्लाई करूँगी लूज पाउडर अंडर माई आइज़ ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो वो आराम से हट जाए आफ्टर माई आई मेकअप इज़ कम्प्लीट. न्यूड पैलेट में से मैं ये लाइट ब्राउन शेड एंड लाइट पिंक शेड लूँगी एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट इन ऑल ओवर माई क्रीज और आउटर क्रीज पे थोड़ा सर्कुलर मोशन में ताकि ज़्यादा इफ़ेक्ट आए. देन आई एम गोइंग टू टेक दिस डार्कर शेड. ये डार्क पिंक पर्पलिश सा शेड है, इसको भी मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी और आउटर कॉर्नर ऑफ द आई पे एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट रियली नाइसली. बेसिकली मुझे पिंक रोज़ गोल्ड टाइप टच चाहिए अपनी आँखों पे, बट बहुत लाइट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेकअप खुद भी लाइट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डार्क से स्टार्ट करूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू गो टूवर्ड्स लाइटर शेड्स. Then I'm going to take these two pink shades from the Annette 69 palette. इनको मैं सेम एरिया पे अप्लाई करूँगी and then I'm going to take this shimmer. This is from Rivaj Cosmetics. It is in the shade 11. बड़ा प्यारा सा rose gold सा shade है इसका. I'm going to apply it all over my lid. Then I'm going to take this another glitter. This is also by Rivaj Cosmetics. इसका शेड मैं मेंशन कर दूँगी in the description box. इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने eyelid के बिल्कुल मिड में और गोल्डन ग्लिटर में अप्लाई करूँगी अपने eyelid के इनर साइड पे. Then I'm going to dust off the powder और इससे फ़ायदा ये हुआ है कि मेरा जो भी फॉल आउट था शिमर का, इवन मैट शेड्स का, वो सारा इस पाउडर के साथ डस्ट ऑफ हो गया. एंड अगर आपका फिर भी नहीं डस्ट ऑफ हुआ तो यू कैन अप्लाई अ बिट मोर ऑफ पाउडर और उसको आप अपने फेस पे डस्ट ऑफ करें. इस तरह शिमर आपके फेस से हट जाएगा. आईलाइनर में यूज़ करी हूँ फ्लॉरमार का. इट्स अ प्रीटी गुड आईलाइनर. ये मैंने रिसेंटली लिया है. इट इज़ सिमिलर टू प्रीटी आईलाइनर दैट आई यूज्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस. इट हैज़ अ हार्ड टिप, इट इज़ जेट ब्लैक एंड प्रीटी इजी टू अप्लाई आईलाइनर विद इट. ब्रश के एंड पे हल्की सी फाउंडेशन लेके मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी. अगर आपको भी स्किन कलर या फाउंडेशन का कलर अच्छा लगता है इन योर वाटर लाइन, यू कैन डू इट इन द सेम वे. कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी रूट कॉस्मेटिक्स का 3-in-1 पैलेट. दिस पैलेट हैज़ अ हाइलाइटर, अ ब्लश एंड अ कॉन्टोर शेड. ऑल द शेड्स आर अमेजिंग. 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. कॉन्टोर आपने करना है अपलिफ्टिंग टेक्निक से इफ़ यू वांट एन अपलिफ्टेड लुक एंड आई हैव टोल्ड दैट इन मैनी ऑफ माई वीडियोज. सो आई होप अब तक आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा इफ़ यू आर अ बिगिनर.
ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ कवर गर्ल का. इट इज़ इन अ वेरी लाइट पिंक रोजी शेड एंड यू कैन सी कि ब्लश भी मैं ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा सा अपलिफ्टेड लगे एंड सर्कुलर सी चीक्स ना लगें. आई डोंट लाइक दैट एनी मोर. इसके बाद आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई द लिप शेड्स. फर्स्ट आई एम गोइंग टू आउटलाइन माई लिप्स और इसके बाद मैं 2 लिप शेड्स अप्लाई करूँगी. आई एम गोइंग टू मेंशन द शेड्स एंड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं. फॉर हेयर स्टाइल आई थॉट टू मेक अ वाटरफॉल ब्रेड क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी बाल खुले छोड़ छोड़ के काफ़ी तंग आ गई थी. सो आई थॉट हेयर स्टाइल ट्राई किया जाए. इतने तो मैं सिखाती रहती हूँ दूसरों को, तो मैं खुद क्यों ना बनाऊँ. सो या आई वेंट फॉर अ वाटरफॉल ब्रेड बट अ वेरी ईजी वन. पहले मैं एक ब्रेड बनाऊँगी एंड देन उस ब्रेड के गैप्स में से मैं छोटे छोटे हेयर सेक्शंस देके उनको पास करूँगी. जस्ट लाइक यू कैन सी. एक और हेयर स्ट्रैंड लेके मैं अगले गैप में से पास करूँगी एंड आई एम गोइंग टू बी रिपीटिंग द सेम. इट्स वेरी इजी एंड इट टर्न्स आउट टू बी रियली प्रिटी. आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम ऑन द अदर साइड. उसके बाद बस मैं बिंदियाँ लगाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू वेयर सम ज्वेलरी एंड आई विल बी रेडी. This is the final look. To be telling the truth, अभी मैं इवेंट से वापस आके रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा. This is how the makeup looks right now and the hairstyle. I think it's pretty good. I don't see anything wrong with it. जब आप अपने मेकअप को अच्छे तरीके से सेट करते हैं with setting powder, बेस अच्छी सी बनी होती है तो मेकअप काफ़ी देर तक स्टे करता है and it doesn't come off or crease that easily. I hope you like the outfit, the overall look, hairstyle and everything. In the comments below do mention आपको किस तरह की और वीडियोस देखनी है, makeup, hairstyles, any specific makeup or hairstyles, and I will definitely look into your request. That's it for today. I hope you enjoyed. Bye bye.